this pandemic and stay safe. Now I request Ms. Swati to take over, who is the Operations Global and IT Senior Executive of our STEM. Thank you. Thank you, Pallavi. Good evening to everyone, and welcome and congratulations to all for completing 8 years of STEM consultancy. I, Swati Gupta, would like to share my thoughts about the company. I have been working in STEM for past 2 years. I have joined as a fresher and now I am working for both IT and operation department. I have got the opportunity of developing my working skill in this organization with determination and hard work. My responsibility is coordination with client and engineer, executing the inspection, developing the resource, enhancing the manpower and revenue. We have covered the inspection, expediting and testing services globally in various countries like China, Germany, Argentina, UAE, Taiwan, Japan, etc. We have resource of more than 3,000 engineers globally and we are connecting with more and more people on daily basis. We believe in focusing on the vision, mission, aim and slogan of our company to provide quality service to our clients. Coming together is a beginning, staying together is a progress and working together is success. So our team plays a vital role for the success of our company. My colleague has helped me in my personal as well as professional growth. I've learned from them how to handle tough situations, come up with great ideas, and work as a team. A number of times there have been ups and downs in our work, but every time we have succeeded and came out with flying colors. Talking about ups and downs, the major threat we are facing today is COVID 19. The second wave of coronavirus infection has been spreading rapidly, and we are witnessing huge number of spike every day. We united successfully and fought COVID 19 together last year. Once again, the time has come to unite and fight. Every The new normal for work that we have adopted is work from home. Every employee has been equipped with individual laptops for their work comfort. So far, I'm having the best experience working in this organization and hoping to continue my work with my team for the enhancement of the company. Stay home, stay safe. Thank you so much, everyone. Thank you, Ms. Swati. Now I would like to take over. First, hello everyone. I am Pallavi Bhosle. I have been in this company since 1 month and I'm handling pan India and abroad operations with the help of my managers and seniors. First of all, I would like to congratulate you all on a very big occasion. It's not just a corporate anniversary, it's an anniversary of a family that grew together, strongly defying the odds. I would like to thank the STEM CEO, Mr. Bhartendu Vimal, for giving me the opportunity to work here in his company. And also thank my managers, seniors, and colleagues for the utmost support throughout the difficulties. All over the months, I have gained a lot of knowledge and skills which are required to shape oneself. Right from the start, like planning, communicating, coordinating, generating leads, negotiation, and much more. I truly feel that the development that comes in oneself depends upon the company and the colleagues who are you with. Keeping my aims higher, I am willing to work in this company with my colleagues with hard work and dedication. As we all know that we have shifted to work from home in this past 1 month, is all because of this pandemic which has grown a lot, where people are losing their loved ones. I just pray and I hope that each and every one who is here present is happy and healthy. Stay safe. Thank you, sir, for letting us know about the upcoming projects of STEM and Tech. I request Mr. Ashish, who handles Sales India on STEM, to take over. Others, please mute, please. Okay. Hi, good evening, everyone. My name is Ashish Dhumal, and I am a mechanical engineer working in sales department, state consultancy.
I will like to first of all thanks Vimal sir and Nilal sir for providing me this opportunity to work in STEM consultancy and giving me a chance to prove as a fresher. Since since first week, I have been received training during for like couple of weeks, and my seniors have given me small assignments and works which I carry out daily. Now, while doing this work or assignment, whenever I get the doubt, they have always helped me and they keep on checking me daily. So I really appreciate this that they check on me, and I'm really thankful that they have guided me for a month. I've been exposed to the current market situation in different sectors in such short period of time. I feel like I have gained professionalism and confidence while presenting and portraying myself in front of team and clients. I feel like I've learned so much in short period of time that, but yet I have learned nothing. I have yet to learn a lot, and I will love to see myself and the STEM company in grow in vast in future. I would like to add things about current situation that we are going through. That I feel like everyone has some kind of stress and problem to each other, but everyone should understand to each other. Like everyone feels like their problems, their situation is a lot worse than other. We should not do that, and we should talk to each other and help each other out. So carry out the protocols of safety for yours and your loved one. And I'm sure we can beat this COVID situation. Thank you for listening. Thank you. Thank you, Ashish. Now I request our accounts admin and HR senior executive, Mr. Amrendra sir, to take over. थैंक यू पल्लवी। गुड इवनिंग ऑल। मैं अमरेंद्र कुमार झा आज आप पूरे स्टेम फैमिली को 8 साल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं स्टेम में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 5 साल से काम कर रहा हूं। मेरे 5 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे विमल सर और अपने कलीग से पूरा सहयोग मिला। स्टेम का सफ़र 7 मई 2013 को विमल सर के द्वारा शुरू किया गया। आज उनके मेहनत और स्टेम फैमिली के सभी सदस्य के सहयोग और मेहनत से 8 साल का सफर तय हुआ। लीडर अच्छा रहता है तो टीम को बहुत आगे ले जाता है। हमारे विमल सर सबको फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं, अच्छे और बुरे वक्त दोनों में। स्टेम में मेडिटेशन करना अनिवार्य है क्योंकि इससे पॉजिटिव थिंकिंग आता है। स्टेम में सब स्टाफ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली, ईद, क्रिसमस सब मनाते हैं और बीच बीच में हम लोग गुरु पूजा करते हैं। इससे सबको खुशियां मिलती है। 2013 में स्टेम कंसल्टेंसी प्रोप्राइटरशिप था, 2016 में पार्टनरशिप हो गया और 2020 में स्टेम इंटेक LLP नई कंपनी की शुरुआत हुआ। स्टेम की शुरुआत में एक क्लाइंट था TUV नर्ड, इसके बाद जुड़ा TUV सूट जिनके साथ कंटिन्यूअस 6 साल से काम चल रहा है। इस तरह अभी 10 से 12 क्लाइंट्स हैं अपने पास, जैसे TUV सूट, DNVGL, रीना, TUV नर्ड, TPL, TUV रिलायंड, MSL, EIS, SMR के BVIL, एनकेवा। 2015 में जब मैं स्टेम से जुड़ा था तो ऑफिस में मैं अकेला था। आज ऑफिस में 8 से 10 स्टाफ हैं। पहले सिर्फ मुंबई में ऑफिस था और आज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में स्टेम का ऑफिस है। पहले अपने पास 10 इंस्पेक्टर थे, अभी अपने पास लगभग 100 इंस्पेक्टर हैं। पहले हम प्रोजेक्ट पे काम करते थे, अभी प्रोजेक्ट के अलावा वेंडर इंस्पेक्शन ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। 2016 में एब्रॉड में भी इंस्पेक्शन शुरू हुआ है। एब्रॉड के लिए हम लोग TUV सूट, DNVGL, मल्टीटेक्स और BVL ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए काम करते हैं। सबसे पहले थाईलैंड में काम हुआ था, आज हम लोग UK, USA, जापान, चाइना, जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर, पोलैंड, टर्की, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, अर्जेंटीना, रोमानिया, कनाडा, कोरिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, UAE, ताइवान एंड फिलीपींस, इटली में इंस्पेक्शन करवाते हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्टेम प्रॉफिट पे कम और काम पे ज़्यादा ध्यान देता है। विमल सर का कहना है
ऐसा क्वालिटी दो जो दूसरा ना दे सके, चाहे 2 पैसा कम मिले लेकिन काम से क्लाइंट संतुष्ट हो। स्टेम में जो है सो कंपनी अपने सारे स्टाफ का पूरा ध्यान रखती है। सबको ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करा के देती है। जब से कोविड आया है, अपने जितने इंजीनियर और ऑफिस स्टाफ हैं सबका कोविड इंश्योरेंस करा के रखे हैं, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। पिछले साल से हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि स्टेम में हर महीना इनवॉइस बना है। काम पे असर तो पड़ा है लेकिन काम चलता रहा है। कोविड के सिचुएशन में हम लोग वर्क फ्रॉम होम हैं, यहाँ भी हम लोगों को विमल सर का पूरा सपोर्ट मिला है, इसीलिए हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। हम लोग पूरी मेहनत से काम करेंगे, टीम वर्क में काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।